ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோடு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். குழந்தை நிலையில் சந்தோஷ சித்தத்தோடு தெய்வீக அன்னையோட அன்பை பெற தியானத்தில் அமர்வோம். மிகவும் அன்போடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இந்த தியானத்தில் தங்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதத்தை பெற தகுதியை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். நம்முடைய கவனம் சகசிராரத்தில் நிலையாக இருக்கிறதா? நம்முடைய சித்தம் சாந்தமாக இருக்கிறதா? நுண்ணுயிர்கள் உணர்வோமான்னு கவனிப்போம்.
கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेशमन्त्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இன்னைக்கு நவராத்திரியோட 6வது நாள். நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியை காத்தியாயனி ரூபத்தில் தியானமும் பூஜையும் செய்வோம். நம்மளை சமநிலைப்படுத்திப்போம். 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். आदि भूमि माता साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு கைகளும் அடி மீது, கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பு சக்தியால் எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை நிரப்பி விடுங்கள். श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இதே சமநிலையான நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ காத்யாயனி தேவியோட அருளை பெற
கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மாதாஜி, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயல் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறோம். தாங்கள் தான் எங்களை ஆட்கொண்டு வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பி விடுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவை வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருக. வலது கை நடு ஹிருதயத்தில் வைப்போம். மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஸ்ரீ ஜெகதாம்பா. நவராத்திரியோட சஷ்டி திதியில் தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காத்யாயனியாக எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. சதுர்புஜியாக 3 கண்களோட நெத்தியில் சந்திரனை உடித்து அஸ்திரமும் கமலமும் எங்களுக்குள் உள்ள பயத்தை நீக்கி எல்லா வரங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைவது என்ற வரத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். மகிஷாசுர மர்தினியாக எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான தீய குணங்களும் தீய சக்தியை அழித்து விடுங்கள் தாயே. காத்யாயனி தேவியாக எங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை,
தர்மம், சத்தியத்தை கடைபிடிக்க சக்தியை தந்தருளுங்கள். காத்யாயனா மகரிஷியோட மகளாக இருக்கிற தாங்கள் எங்களுக்குள்ள சோக துக்க பயத்தை நீக்கி க்ஷேம சௌக்கிய ஆரோக்கியத்தை தந்தருளுங்கள். காத்யாயனி சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कात्यायनी देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் ஹிருதயத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் விசுத்தி சக்கரம். மெதுவாக கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம், அகம்பாவம், மமத்துவம், தேவையில்லாத சுய கட்டுப்பாட்டுகள் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ காத்யாயனி தேவியாக இவைகளெல்லாம் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தில் அமர்ந்து எங்களை காத்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சகசிராரத்துக்குள் வாருங்கள். சகசிர கமலத்தில் அமருங்கள். சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. சைத்தன்ய உணர்வை மேம்படுத்துங்கள். சிந்தனையற்ற ஆனந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள்.
जय श्री माताजी. நம்ம கணேஷ அதர்வசீர்ஷமும் ஸ்ரீ சுக்தமும் கூறிண்டு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு புஷ்பார்ச்சனம் செய்யலாம். அக்ஷதம் இருந்தா அக்ஷதால கூட செய்யலாம். இதெல்லாம் கண்களை மூடி தியானத்தில் கணேச அதர்வசீர்ஷமும் ஸ்ரீ சுக்தமும் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्वशीर्षम्. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि सम्मन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अरदेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री श्री सूक्तम्। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गाम अश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्ये श्री मादेवी जूषताम् कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम इह उपव्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसां ज्वलन्तीं श्रियं देवी लोकजूष्टाम् उदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्ष अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुं मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह पादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे शुद्धीपसामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्मुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम इह उपव्ये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाच सत्यमशिमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे इच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यःकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयात् आज्यवन्वहम् श्रीसूक्तं पञ्चदशं च श्रीकाम सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जूषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्यवादिगवे रथं प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यौ धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पीबतु वृत्तः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभां मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलदखां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसिद्धमह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्य अच्युतवल्लभाम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
आनन्दकर्दमश्रीदचिकलित इति विश्रुतः ऋषयश्रियपुत्राश्च श्रीदेवी देवता मातः ऋणरोगादिदारिद्र्य पापशुद्ध अपमृत्यवः भयशोकमनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् अभिधाचोपमाननम् मदीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरं दीर्घमायुः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மாதாஜி சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். Today is a great day of Navaratri. We are sitting on the cusp of the 6th and the 7th. 6th and the 7th is the day when Mahasaraswati finished her work and the incarnation of the Shakti itself started. So at 12 o'clock today, the Devi takes the Shakti upon herself. Of course, as you know, that Mahakali and Mahasaraswati both are the powers of Sri Sadashiva. Adishakti first formed herself into Mahakali, which is the power of desire. But all these powers are nothing but the power of God's love. So, in the series of this great love of God, Adishakti had to first become the power of desire. In the same way, Sahajyogis who are bestowed with this power of love have to have full desire in their heart. Desire to love. That desire is very different from the other kinds of human love you have known. In other kinds of human love, when we have relations with others, we have expectations, and that's why it is very disappointing. Our expectations always run higher than our understanding and realities. And so we suffer from disappointments and frustrations. And the love that has to be nourishing and fulfilling becomes a thankless job. So when it reflects in the human beings, it is the desire to be loved by everyone, not to love others. Everyone should love you, but how far you love another is the point. Naturally, everyone for oneself
So really nobody loves. But when it comes to real love, then sacrifice becomes a nature. You don't call it a sacrifice, but you call it a privilege. You say it's a privilege to give love. It's a great chance that we can love. It's our great fortune that we can love. It's God's blessings that we can love and give. So the giving starts when you realize, not understand, but realize the love, the power of love in the person. That's the third power which starts expressing. Because after this, a person becomes active, creation. That's how the action of achieving that state of giving love starts. To begin with, we start activating in so many ways. As I said, we start expecting and thinking that we are loving others. We act for that. In that madness that others should love us, others should respect us, others should think we are great, they should recognize us, we start loving something else which is not so important. So we go on first to money. Money becomes a very important one. We think that if you have money, people will love us. We become very powerful as money. Moneyed people, as rich people. So we start accumulating money. We start loving the money. But money is not the truth. We don't love the truth. When we start loving the money, we start thinking about problems of money. Such people can become miserly to such an extent that even towards God they become miserly. They never have money actually, because if you cannot spend your money, you have no money. If it is not available, what's the use of having all the money? That's how they have problems. Because they love money and not the God Almighty. They are worried about money, but not about the truth. Then with that, they go to a second thing, is the power. They want to have the power, they want to become presidents, ministers and bureaucrats and all that. They want to have the power, they think by having great power, people will respect them and love them. But they get drowned in fear. What they get is fear. All the time they have fear. Also money people have fear. That's why in the Bible it is said that wages of sin is fear. What is sin? Sin is not to love the truth, is the sin. When you don't love the truth, then it is sin. So when you start getting worried about your positions, like the president feels that he'll lose his job, the vice president thinks that he'll be sacked, the prime minister thinks he may not be elected, the bureaucrats think they will lose their jobs, they won't get promotions or something. There will be problem. All these people are suffering from terrible sense of fear. They have no freedom of any kind. And in that category, people just go down so much with fear. They are even worse than people with money. Because once they are lost, they are lost. They can never revive. No chance. Once you lose the election, you are lost. Nobody is going to look at you. I have known people who have been at a very high position, and once they lose that position, nobody looks at them.
They just walk like straight, otherwise there will be at least 100 cars to receive them. And once they lose their jobs, there's nobody even to look at them, they just walk like ordinary people. Even seeing all these things happening, this truth, just coming before them so clearly, they do not keep to that truth. They do not realize that truth. They do not have that realization within them. They understand for a while and they go after it. Then when the person dies, they see a moneyed man, a rich man is forgotten. Nobody is bothered about them. Who was the rich man? On the contrary, the people, the prime ministers and all those high-ranking people, when they die, immediately books start coming out about their private life, all the dirty things they did, and all the horrible things they did, and what sort of a life they led. There's no fragrance in their life, no idealism, nothing. Because responsibility that they have to the public and to themselves, they have not understood it. And they made a mess of their private life. That's why this kind of a reaction comes after that. The other day I was reading an interview with a very well-known actor. He's a born-realized fellow, I know, but he's gone down completely. He says, I think, what's the harm in drinking? What's the harm in gambling? What's the harm in smoking? Because after all, I'm going to die. And then, who is going to bother? Supposing I get cancer, so what? In any case, I'm going to die. So why not enjoy these pleasures of life? But what about death? You continue. Then all that you've been doing will come out. And people will not like to have your photograph in the household. Children will spit at you. What about that? Your life is not what it is today for 3, 4 years or 10 years or 15 years of your so-called success. But when you die, all this craziness will disappear. And people will come out with truth about it. That is how this power to be popular finishes. This cheap popularity, this cheap type of treatment towards yourself gives you a personality that will not be worshipped, that will not be accepted. Nobody will go to buy something great. For some time it will continue. But in totality, such a person has given nothing to humanity. That's how the power of Saraswati works. People go into action for achieving results of getting into power. But it should act to discover the truth. Saraswati should give you the lead to find out the truth. That when you act in those funny places and streets, you discover this is not the path. We have missed it. The path is somewhere else. We've lost it. Let us find out the real path, because this doesn't give joy. This one can learn from others, from history, from so many other things, and from your own parents, from your society, and from yourself, and from your children also. If you want to learn, that is the quality of Saraswati Pujaris, that they take to jnana, they take to reality. Vedas, in the beginning of the Vedas, it said that if by reading these 4 Vedas, if you do not get the Vida, Vida is the knowledge on your nerves, means realization.
there is no use reading these Vedas. So the Saraswati's first thing is that through the reading, through the process of Saraswati's manifestation, you must reach a point to understand that this is a rat race and we have to get out of it. We have to stand back. When that happens, then the Mahalakshmi Tattva starts working in you. That is the third Tattva, it starts working. Mahalakshmi Tattva then starts expressing its love in its full extent through evolutionary process in human beings. He starts evolving simultaneously. He sees on both the sides what's happening like a witness, and he uses his Mahalakshmi power. In the first part of the Mahalakshmi power, he starts getting out of the common rut of the family bondages and the other human bondages of power, money, lust, and he starts moving on a higher plane. He gives us a new idea of popularity by establishing the truth. Because through Mahalakshmi power, you discover the truth on your central nervous system, and ultimately it is the light of an enlightened brain. When the Mahalakshmi power starts manifesting, one starts thinking of others, not on material level. That materially people are suffering, now there are people in Ethiopia who say we must give them some food, this, that. No. They go to the roots of the problems. Why? Or they don't think there should be equal distribution of money and wealth. No. This is superficial. Because wherever it is done, people are not happy. They feel they have no freedom. Those people who have money are not happy because they have a demonic life where they are free. They behave like devils. No sense of totality, no sense of collectivity. When they become like that, they even do not realize that they have become demonic. Everything becomes like a big martyr. They fight for lands, they fight for nations, they fight for rights, and they do all kinds of horrible things. Start destroying people, human beings. All the turmoil of today is the effect of, mostly in the West, and also all the Arabic countries, I would say, is of the right side. And in the East, it is of the left side. The turmoil is. It's very surprising that where, it's very contrasting also. It's a funny dilemma for me, I can't understand it sometimes. That where they are so particular about the chastity, they become, when they are so much worried about chastity and everything, that they should have problem of the left side. They do puja, they have shraddha, they are like Catholics, we can say, are never rich people.
himself, except in New Switzerland. I think here everybody is rich. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமஸ்காரம் பண்ணி நைவேத்தியம் ஏதாவது ரெடியா வச்சிருந்தா நைவேத்தியம் பண்ணி ஆர்த்திக்கு எந்திரிப்போம். सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना,
संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो य सके जो सेवा, हो य सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय. நமஸ்காரம் பண்ணி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து இன்றைய தியானத்துக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்துக்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகிஷாசுர மர்தினியாக தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டு ராட்சசம் மகிஷாசுரத்தை அழித்து உலகத்தில் சேம சௌக்கியம் நிலைநிறுத்தினீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் எங்களை சுற்றி இருக்கும் எல்லா விதமான உபாதைகளும் எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கி தாங்களுடைய ஒரு சிறந்த கருவியாக எங்களை மாற்றிவிடுங்கள் தாயே. நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னிங்கள். குண்டலினி வைத்து பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.